हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल। आज आम भिडियो डिस्कस करवा अमेरिकन लिटरेचर हिस्ट्री विषय तो केमती ओवर सेंचुरी से इवॉल्व होती से विषय में पढ़ा। सो आम जब देखा बेसिकली आम डिवाइड करवा अमेरिकन लिटरेचर को तो फास्ट आसो नेटिव अमेरिकन लिटरेचर कौन बिफोर 1600 1600 शताब्दी पूर्वर जो लिटरेचर थिला सेटा को आम कहवा कौन नेटिव अमेरिकन लिटरेचर। सो इट वाज ए पीरियड जेतेबेले कि कौन कॉलोनी आमर एस्टाब्लिश हो नथिला, जेतेबेले प्योर अमेरिकन अमेरिकन लैंड रे जो माने रहिथिले सेमानंक द्वारा जो ओरल ट्रेडिशन ता स्टार्ट हेतिला ताको हम कहबा नेटिव अमेरिकन लिटरेचर। बिकॉज सेतेबेले लेखा स्टार्ट हो नथिला ओराली मीन्स से जो माइथोलॉजिकल स्टोरी कह जाउथिला जोटा कि ओरल ट्रेडिशन। ओरल माने मो कहानी कहली सेटा को मो पिला माने मन रखिले तांको पर पीढ़ी एई आकार रे लिटरेचरटा थिला। बहुत सारा हमर मोरल स्टोरी, रिलीजियस स्टोरी लाइक ए सब गुडा कह जाउथिला। तो चलो देखिबा एटा थिला फास्ट बिफोर 1600। तापर 1600 रु 1750 जाके आसीबो कॉलोनियल एंड प्यूरिटन पीरियड, जितेबाला सब यूरोपियन कॉलोनी आसिक एस्टाब्लिश हे अमेरिका रे। एटा गोटे पीरियड थी। तापर 1750 रु 1800 हमर एनलाइटमेंट पीरियड, 1800 रु 1865 रोमांटिक पीरियड। तापर 1945 1914 रु 1945 आसीबो रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म। 1945 पर मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म पीरियड। तो यही सब गुडा को आम आज पढ़ा डिटेली तुम यूनिट 1 रे जहाँ जहाँ अच्छी आम डिस्कस करवा। So, the story of American literature, it's a fascinating journey through time, reflecting the history, struggles, and dreams of people who lived in America. So, from the ancient oral traditions of Native Americans to modern experimental fiction, literature in America has evolved alongside the nation itself. तेणु नेशन सहित लिटरेचर रो भी इवोल्यूशन हेजे। चलो देखिबा। तो फास्ट आसिला नेटिव अमेरिकन ओरल ट्रेडिशन जोड़ा बे कहूतली 1600 शताब्दी पूर्व। लॉन्ग बिफोर यूरोपियन एक्सप्लोरर्स सेट फुट ऑन अमेरिकन सॉइल, यूरोपियन परिव्राजक माने बा यूरोपियन माने अमेरिका भूमि रे पाद देबा पूर्वरु आरंभ हो सारी कौन आमर ए पीरियडटा, जेतेबेले द लैंड वाज इनहाबिटेड बाय डाइवर्स नेटिव अमेरिकन ट्राइब। जेतेबेले कि अमेरिका रे बहुत प्रकार ट्राइबल लोक माने बास करथिले। सेतेबेले तो मॉडर्नाइजेशन हे नथिला, सेतेबेले तो सिविलाइजेशन हे नथिला, समस्त ट्राइबल ही थिले। सो दिस ट्राइब्स हैड नो रिटन लैंग्वेज, सेमानकर लिखित भाषा नथिला, बट हैड ए रिच ओरल ट्रेडिशन passing down myths, legends and songs from generation to generation। गोटे पीढ़ी रु आउ गोटे पीढ़ी ए ओरल ट्रेडिशन चली आसीथिला। So imagine Native American elders sitting by a fire, surrounded by children telling stories about great spirit, the creation of the world, the lesson of the nature. These stories served many purposes। एग्जाम्पल हूँ गोटे कौन दि वर्ल्ड ऑन दि टर्टल्स बैक एंड इरोक्विज क्रिएशन मिथ। तमाने एटा गोटे कहानी थिला, गोटे बड़ जान टर्टल थिला, ऊपर स्काई थिला, तळे लैंड थिला, सबटे समुद्र थिला। तो स्काई पीपुल माने को स्काई पीपुल कह जाउतिला। तो से माने आसिकी गोटे होल देकी आइलैंड तळे पहुँचिले समुद्र रे। तो समुद्र लोक माने तांको हेल्प कले। कौन हेल्प कले? से केमती रहिबे तांको पई गोटे बड़ जांट टर्टल गोटे कइंछ पिठी रे तांको पई लैंड तयारी हला। ए भले कहानी केमती पृथ्वी सृष्टि है। यहाँ हूँ गोटे बहुत इंपोर्टाट बहुत प्रचलित कहानी माइथोलॉजिकली ओरल ट्रेडिशन में चली आसी। आम मैंने छोट बड़े गप शुणु से भाई चलती। सो हीरोइक टेल्स सेलिब्रेटेड वॉरियर्स एंड लीडर्स। सो मोरल लेसन टॉट द वैल्यूज ऑफ कम्युनिटी, रेस्पेक्ट एंड बैलेंस विथ नेचर। एम सब बहुत सारा मोरल स्टोरी चली आसूला बिफोर 1600। सो सिंस देयर वाज नो रिटन रेकर्ड, कौन रिटन रेकर्ड ना, दिज स्टोरीज चेंज स्लाइटली। धीरे धीरे बदल तो लेखा निहाती क्या जनकूठू आउ जड़े शुणव मे भी से किसी मॉडिफाई करें। सो रिटेलिंग बट रिमेन डीपली रूटेड इन नेटिव अमेरिकन कल्चर। तापर आसला कॉलोनियल एरा, जितेबाला आमर कोलंबस आविष्कार करथिले अमेरिका को। तापर सब विभिन्न सेटलर माने आसिकी पहुँची यूरोप रु अमेरिका को। बेसिकली से माने 13टा कॉलोनी एस्टाब्लिश करथिले टोटल उपरे। तो देखिबा कौन होची। When European explorers arrived in America in 1500 and 1600 century, they saw it as a land of opportunity, but for the Native American this was the beginning of destruction। तांको पई तो गोटे होप थिला, गोटे नुआ लैंड आसी पहुँचिले, बट इट वाज एक्चुअली
the beginning of destruction for Native Americans. Why? The Spanish, French, and English colonists came for different reasons. The Spanish have gold and converted Native American to Christianity. The French engaged in the fur trade and had relatively peaceful relation. ସ୍ପେନିଶ ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ କନଭର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ନେଟିଭ୍ ଆମେରିକାନଙ୍କ ସହିତ। ଆଉ ଇଂଲିଶ ମାନେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଟଲ୍ ହେବାକୁ ଆସିଲେ କୋଉଠି ଆମେରିକାରେ, ଆଣ୍ଡ ଦେ ଅଫେନ୍ କ୍ଲାସ୍ଡ ୱିଥ୍ ନେଟିଭ୍ ଆମେରିକାନ୍ସ ଓଭର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ନେଇକି ସେମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା ସବୁବେଳେ କାହା ସହିତ? ନେଟିଭ୍ ଆମେରିକାନ ମାନଙ୍କ ସହିତ। ତେଣୁ ହ୍ୱାଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର ଇମର୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଟାଇମ୍? ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ କୋଉ ଭଳିଆ ଲେଖା ହେଇଥିବ? ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଯାତ୍ରା କରି ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଲିଟରେଚର କୋଉ ଭଳିଆ ହବ? ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ହବ ନିହାତି ରୂପେ। So exploration narratives, these were adventure filled accounts of discovering a new world. Christopher Columbus जे अमेरिका को आविष्कार करथिले wrote journals about his voyages, तांको जलयात्रा विषय लिखिथिले। जॉन स्मिथ हमर जेम्स टाउन रो जे फाउंडर wrote the general history of Virginia describing the land as a paradise। तापर कौन हला सब रिलीजियस राइटिंग स्टार्ट हला। दी प्यूरिटन्स, एक्चुअली प्यूरिटन्स माने किए? प्यूरिटन्स माने होचंदी इंग्लिश प्रोटेस्टेंट, बुझला? दे ऑलवेज वांटेड टू प्यूरिफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड, माने कैथोलिक इन्फ्लुएंस रु चर्च ऑफ इंग्लैंड को से माने रक्षा करबा को चाहंतिले। दे हैव सम सर्टेन स्ट्रिक्ट रिलीजियस डिसिप्लिन, दे हैव मोरल प्यूरिटी। से माने कहतिले कि डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ गॉड से माने सब बेले अपोज करथिले एंग्लिकन चर्च को, जो माने कि जोटा कि किंग हेनरी VIII को द्वारा एस्टाब्लिश हेतिला। माने एंग्लिकन माने से माने बाइबल फोकस्ड वर्शिप करथिले, बट ए माने प्यूरिटन मानकर से मानकर कुछ स्ट्रिक्ट रूल थिला। तो से प्यूरिटन मानक कथा ठीक कुहा जायछि। तो प्यूरिटन जो माने कि न्यू इंग्लैंड रे सेट हेतिले, न्यू इंग्लैंड मींस अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका रे, वर एक्सट्रीमली रिलीजियस। तो देयर लिटरेचर रिफ्लेक्टेड देयर स्ट्रिक्ट बिलीफ। तांकर सबडू इंपोर्टेंट राइटर थिले से टाइम रो होचंदी विलियम ब्रैडफोर्ड। तांकर राइटिंग होची कोन? प्लायमाउथ प्लांटेशन डिटेल दी पिलग्रिम्स। सो तांकर जर्नी आ तांकर हार्डशिप विषय से लिखा है। जोनाथन एडवर्ड्स, ही वाज ए प्रीचर हु रोड द फेमस sermon sinners in the hand of an angry god, warning people about God's wrath। तेणु भगवान का क्रोध ऊपर से लिखिचंती रिलीजियस टेक्स्ट, जेहेतु जन से प्रीचर थिले तेणु से तो भगवान को ऊपर ही लिखिबे। कैप्टिविटी नैरेटिव मध्ये लिखा जाउतला। दीज आर स्टोरीज ऑफ सेटलर्स बीइंग कैप्चर्ड बाय नेटिव अमेरिकन। केते कांसरे जेतेबेला सिकी से माने नुआ एक्सप्लोरर ने अमेरिका रसी पाद दउथिले, कोठी ना कोठी से मन भीतर क्लास होउथिला, तो अमेरिकन माने से मन जेतेबेला बंदी करिक रखुथिले, तो से स्टोरी माने मध्ये हमकु देखबा को मिलुथिला एई पीरियड रे। माने को पीरियड रे? कॉलोनियल एंड प्यूरिटन पीरियड, जोटा कि 1607 रु 1750 भीतर देखा जाउथिला। सो मैरी Rowlandson's A Narrative of the Captivity and Restoration became one of the first bestseller in American literature. The period was not about creative storytelling but about survival, faith and conflicts between settler and indigenous people। से जो एक्सप्लोरर और इंडिजिनस पीपल नेटिव अमेरिकन से मानक भीतर जो स्ट्रगल फेथ थिला, से मानकर जो स्टोरी थिला, स्ट्रगल कहानी थिला, कोठी कोठी अमेरिकन माने नेटिव अमेरिकन स्ट्रगल करिछन, तो कोठी कोठी सेटलर माने आसी कि असुविधार सम्मुखीन होइछन्ती। सेते बेले ए सब लेखा देखिबा को मिलुथिला। देन इट कम्स 1700 रु 1800 रिवोल्यूशनरी एरा बा हमर इंडिपेंडेंस पळासिला। कोन हला? जेते बेले सब एक्सप्लोरर माने आसी कि पहुंचिले कोठी, हाँ कॉलोनी तैयारी कले कहिथिल ना। टोटल हमर 13टा ब्रिटिश कॉलोनी तैयारी हेतला नॉर्थ अमेरिका रे। तो सेते बेले कोन हेले ना, से माने स्वाधीन हे कि नथिले, से माने रहुथिले अमेरिका रे, बट दे वर कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन। तो ब्रिटेन कोन कला? ब्रिटेन इम्पोज्ड हेवी टैक्सेस। तमे बोस्टन टी पार्टी कथा सुनिथिबो। तो सेते बेले युद्ध चलिला काहा भितरे? कॉलोनियल सेटलर आ ब्रिटिश ट्रूप तांका भितरे युद्ध चलिला। तो सेते बेले लीडिंग के नउथिले? जॉर्ज वाशिंगटन लीडर थिले। ता परवर्ती समय से प्रेसिडेंट हेले तमाने जानिथिबो थॉमस जेफरसन, गोटे सेते बेले क्रांतिकारी ऑथर थिले। बेंजामिन फ्रैंकलिन जने डिप्लोमेट थिले। एमान सब लीडिंग करूथिले। तो फाइनली एमानकर जुलाई 4 1776 रे अमेरिका नामर इंडिपेंडेंट हैला। तो से टाइम रे जो सब राइटर थिले रिवोल्यूशनरी लेखा लिखुथिले, से कथा कहैछि। बाय 1700 अमेरिकन कॉलोनीज वर ग्रोइंग रैपिडली, पीपल नो लॉन्गर सॉ देमसेल्फ एज जस्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट्स बट एज अमेरिकन। तेणु किछि वर्ष पर से माने कहूथिले जो कथा, जो एक्सप्लोरर माने आसी पहुंचीथिले धीरे धीरे अमेरिका रहिबाक लागले, से माने चाहिलेनी ब्रिटेन रो दास हेकि रहिबाकू। से माने सब आसीथिले ना यूरोप रु, बट से माने चाहिले आमे स्वाधीन हबु, से माने निजुको अमेरिकन बोली कहिबाकू लागिले। सो दिस लेड टू अमेरिकन रिवोल्यूशन 1775 रु 1783।
literature during this period had a clear purpose, inspiring revolution. Pamphlet, political essays were used to spread ideas of independence. Thomas Paine's Common Sense, it was a bestseller, urging people to fight against British rule. The Declaration of Independence, it was written by Thomas Jefferson, who became a landmark document in world history. Benjamin Franklin's uh, Poor Richard's Almanac contained proverbs and witty saying about life and success. So this era marked the birth of American identity. Literature played a powerful role in the Romantic era. The rise of American fiction. Romantic era ଆମର 1800 ରୁ mid 19th century. Now America ଗୋଟେ independent country ହେଇସାରିଛି. So writers no longer wanted to copy European style. Instead, they created their own distinct literary voice. This period saw the birth of American fiction. Romanticism, as you all know, it's focused on emotion, imagination, and nature. Washington Irving's The Legend of Sleepy Hollow was one of the American short stories. James Fenimore Cooper's The Last of the Mohicans. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗପଟା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୋଭେଲଟା। ମୁଁ କେତେବେଳେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଦି ଲାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ମୋହିକାନ୍ସ। ଏଇଟା ବି ସେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କାହାଣୀ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋରରଙ୍କର କାହାଣୀ। ट्रांसडेंटलिज्म, देखो ट्रांसडेंटलिज्म कहले कौन बुझ? ट्रांसडेंट मीन्स कौन? गो बियॉन्ड, दैट मीन्स ह्यूमन कैन गो बियॉन्ड लॉजिक एंड रूल्स, दैट इज ट्रांसडेंटलिज्म. सो इट्स a spiritual movement that encouraged self-reliance, living with harmony with nature. Ralph Waldo Emerson wrote Nature, emphasizing the beauty of natural world. Henry David Thoreau, he was about living simply in the woods. तापरे Gothic and dark romanticism explored the dark side of human nature. Edgar Allan Poe, The Raven and the Telltale Heart of Eerie, psychological horror story, ये सब start ହେଲା धीरे धीरे. So this was the first golden age of American literature. तापरे ଆସିला realism and naturalism. देखो realism ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍ କ'ଣ? ଯେମିତି ରୋମାଣ୍ଟିସିଜିମ୍ରେ ତୁମକୁ କହିଲି ଇମାଜିନେସନ୍ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ରିଲିଜିମ୍ ମିନ୍ସ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପିପୁଲଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯିବ. ସୋ ଆଫ୍ଟର ଦି ସିଭିଲ୍ ୱାର୍ ଦି କଣ୍ଟ୍ରି ଚେଞ୍ଜ, ରାଇଟର୍ସ ଆବାଣ୍ଡନ୍ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟେଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଡିପିକ୍ଟିଂ ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ରିଅଲ୍ ଲାଇଫ୍ ପିପୁଲ୍, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କୁହାଯିବ ରିଲିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଜିମ୍. ସୋ ଫୋକସ୍ଡ ଅନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଅଫ୍ କମନ୍ ପିପୁଲ୍. ମାର୍କ ଟ୍ୱାଇନ୍, ଦି ଆଡଭେଞ୍ଚର ଅଫ୍ ହକଲବରି ଫିନ୍. ହକଲବରି ଫିନ୍ଟା ବି ଭାରି ମଜାଦାର ନୋଭେଲ୍, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା. So, who criticized racism and hypocrisy? Naturalism, that showed people's lives were shaped by forces beyond their control. Science ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରେ naturalism. Jack London's The Call of the Wild explored survival in harsh conditions. Stephen Crane's The Red Badge of Courage showed the horrors of the war. This period rejected fantasy and idealism, focusing instead of hard truth. तापर आसला मॉडर्निज्म, इयरली टू मिड 20th सेंचुरी, माने हमर 1945 रु परवर्ती समय रे मॉडर्निज्म पोस्ट मॉडर्निज्म स्टार्ट हैला. तो वर्ल्ड वार 1914 रु 1918 हैला हमर वर्ल्ड वार 1. इट वाज दी एंड द ग्रेट डिप्रेशन मेड पीपल क्वेश्चन एवरीथिंग. राइटर्स एक्सपेरिमेंटेड विथ स्टाइल एंड स्ट्रक्चर. दिस इज आल्सो कॉइन्ड एज लॉस्ट जनरेशन, द जनरेशन आफ्टर 1914. लॉस्ट जनरेशन विषय काली तुमको गोटे भिडियो कहूली दी को चैप्टर आम चलता फेरल टू आर्म्स अर्नेस्ट हेमिंग्वेंकर. तो लॉस्ट जनरेशन कौन? 1914 पर जो सब यूथ मैंने थे, यूथ मेन हूँ वुमेन हूँ, लॉस्ट जनरेशन कहुए. बिकज प्रथम विश्वयुद्धर विभीषिका से निज आखि आगे भोगी, परिवार बंधु स्वजन मानक हरई. तो दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. दिस जनरेशन इज नोन एज लॉस्ट जनरेशन. तो एफ स्कॉट फिट्जरलैंड तांकर दी ग्रेट गैट्सबी गोटे सुंदर कहानी भी अच्छी, तुम मैंने हॉलीवुड मूवी अच्छी चाहिए देखिपर. अर्नेस्ट हेमिंग्वे दी ओल्ड वुमेन एंड दी सी, दी फेरल टू आर्म्स काले आम पढ़ुले जोटा कैथरीन आउ फ्रेडरिक स्टोरी, लव स्टोरी. सो दैट इज आमर आसीगला लॉस्ट जनरेशन. तापर आसला एक्सपेरिमेंटल राइटिंग. कौन एक्सपेरिमेंटल राइटिंग? विलियम फॉल्कनर्स दी साउंड एंड दी फरी एंड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मीन्स गोटे प्रोटागोनिस्ट को माइंड रे कौन कौन चलती से आमको देखा जिवो. दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. पढ़िबा से विषय रे जेतेबेले सब लिटरेरी डिवाइस यूज करिबा. तापर आसीगला पोस्ट मॉडर्निज्म एंड कंटेम्पररी लिटरेचर. आफ्टर वर्ल्ड वार 2 लिटरेचर बिकम्स डाइवर्स, प्लेफुल एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन न्यू सोशल इश्यूज. तेणु पोस्ट मॉडर्निज्म जितेबाला आसला, इट मिक्सड फैक्ट एंड फिक्शन, प्लेड विथ नैरेटिव स्टाइल्स. कुर्ट वोनेगट, स्लाटर हाउस, 5 combined war, sci-fi and humor. Diverse voice, writers from different racial cultural backgrounds gained prominence.
टोनी मॉरिसन बिलोव्ड एक्सप्लोर ट्रॉमा ऑफ स्लावेरी टोनी मॉरिसन ब्लैक अमेरिकन थिले बहुत सुंदर तांकर भी नोवेल गुड़ाक बोधे तांकर गोटे थिला कलर पर्पल बहुत सुंदर नोवेलटी सेटा को भी हम डिस्कस करबा आमी टान्स द जॉय लुक क्लब एग्जामिन चाइनीज अमेरिकन एक्सपीरियंसेस Today, American literature continues to evolve, exploring technology, gender, and identity, exciting new ways. So, ଆମେ କାହିଁକି ଏସବୁ ପଢୁଛେ? Why this is important? American literature tells the story of a nation. It reflects the struggle of Native Americans, the dreams of early settlers, the fight for freedom, the challenges of modern life. So, it's not just about the books, it's about the journey of American itself. So, thank you all. I hope you all understood the session.